ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂ ਆਡੀਓ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਹੁਣ? ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਤਾਂ, ਹੈਂ।
मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। उनकी ज़्यादा सामान भी लगा रहे अंदर ही आ जाओ। अंदर ही हाँ हाँ वहीं पे डिस्कशन कर। ओके कम। So this is our first case today. We are replacing 3, 4, 2, 5, 2, 6, and 2, 7. Okay. We are replacing 2, 5, 2, 6, and 2, 7. Okay. We are replacing. So we are doing it in a guided way. So this is how you plan the case in the Blue Sky Bio software. And so first of all, you need to see what type of bone you are dealing with. So from your planning, you can just hide all the implants and then see, yeah, what type of bone it is. So here you see in this corner, you will see the bone density. So it is 1820 Hounsfield units. So this is like a D1 bone, very hard bone. So it means you need to drill fully. You cannot under drill and place the implant because then it will be too tight, right? So you need to use all the drills which are there in the kit. Okay. So if you look at the other area, the second one, you again have to click on all the implants and you need to reach this area, then you hide the implant. Okay. Now you are in that area where you are going to put the other implant. So here you see it is 385
619. So it means, what is the bone quality now? Yeah, it is medium. It is like, you can say D2, D3 type of bone, right? D3 type of bone. And then you again do the same. You click on this implant and then you hide it. Now you see the bone quality here. It is 1500, that is like D1 bone, and in this area it is a little lesser, 886. So it is a like, you won't get the same quality of bone in the whole area. So here you see a little radiolucency. So it means the bone quality is a little less. It is 387 here, and here it is 1500. So it's a mix of both the bone qualities, right? So anyway, we'll be doing the drilling, and this is the implant placement in the 2-7 region. This one, you see the implant placement, and you see I have placed the implant a little deeper. Why? Because the patient is having a bridge in the lower jaw here. So you are getting very little space here for the prosthesis. Okay, so I need to put the implant a little deeper so that I have enough space. I'll do a little osteoplasty here, and I get enough bone, the space for the prosthesis here, right? So that is why this implant need to be put deeper. So about the uh, implant type, implant sizes. So this implant, 2-4 implant is, this is the position of the implant. So you might think, why I haven't put the implant this way? Why not this way? So that would have been too much buckle. Okay, so I placed it a little like this, so that my exit is on the crest. Now I'll show you how you choose the exit, choose the direction of the implant. Like in this section, in this view, 3D view, if you remove all the this DICOM data, right, and you have, this is the oral scan data, and over that you have your guide. So you delete guide as well here, and then you'll see the exit of the, now this is the guide with window. I delete this one also. Now you see the exit of the implants, right? So you need to make them parallel on the oral scan as well. Okay, so like this. And we are talking about this implant. So this implant I have placed a little palatal because they need to be in a good emergence, right? Prosthetically perfect emergence, where the implant is getting the axial load. So all through this planning, our aim is to get a prosthetically driven. That is, wherever you want your implant to exit, right? So that the all the time the implant is having a axial load, not the off axial load, right? If I do it this way, it will be having a off axial load, right? So this implant size here is 2.5 implant, 18 mm, 4.8 into 18. 4.8 means 4.5, 4.5 TS4. If it is TS3, then it will be how much? For a TS3 implant, this occlusal diameter will be 4.6. For a TS4, it is 4.8, right? So we may place TS3 or TS4, whatever is available. Okay. And for the 2.7 implant, the size is 10 mm and 5 mm diameter and 10 mm.
You can actually place a 5.5 also here because it is quite a wide bone here, right? So through the guide you can place a 5 mm or 5.5 also, and this is already 10 mm. And if you want to place a 11.5 mm implant, then we'll be doing a little sinus lift as well, and you can actually go for a 5 point the 11.5 mm implant. Okay, so if I replace it by 11.5, so it will be, you will be able to engage the opposing cortex, but there's actually no need. Why? Because the bone quality is already very good. You do not need to engage the opposing cortex, right? Can we do sinus lift through the guide also? Yes, you can. There's another kit, we call it one CAS kit. So we need to use that if you want to do the sinus lift through the guide. Okay, one CAS kit. Yeah. Or you can just drill and then use your regular osteotomes. This is what we'll be doing, regular osteotomes. So with that you can lift the. So if we do that, we'll be able to place an implant of 11.5 in the 2/7 position. Okay. Plus the sinus lift will also be guided. Sinus lift will also be guided in the one casket, not in the kit we are going to use. Okay. We are going to use a regular one guide kit, and we'll be using the Summers osteotomes. So, sir, the surgical guide can also be used to do sinus lift if we have one casket. Yes, yes, yeah, you can do. Okay, so in the 2/6 position, our implant size is 8.5 and 5 mm diameter and 8.5. Here also, you can actually go for a longer implant, like you replace it by 10 mm. So while planning, I always write the actual size. So if you do the sinus lift, you can go one side size bigger. So in this area, because the bone quality is not very good, we'll be definitely going for the indirect sinus lift and placing a 10 mm implant in place of 8.5. Okay, and about the guide, so you want to see the guide, it is guide with window, and then you hide the pre-op scan of the upper jaw, you hide all the implants, and this is our guide. Okay, so this guide hole is how much? This is for a 4.5 mm implant, and this guide hole will be how much diameter? No, guide hole 5.1, because the barrel of the drill that they use to place a 4.5 mm implant is 5 mm. So this guide hole is 5.1, and these two guide holes, they are for a 5 mm implant. So how much will be the diameter of this? 5.8. 5.8, because the barrel of that drill is 5.7. Okay, yeah, so it is just 0.1 mm more so that your guide can go easily. And about the length of the guide tube, 10.5 is the offset. Yeah, offset means the distance from here to the to here, from the top of this guide tube to the implant, crest of the implant. So that is it. And if you look at the uh, length of the guide tube, length means how much thickness of the guide tube. So I will just guide with windows. Yeah. So this thickness, this one. So it should be at least 3.5 mm for your guide to be stable while drilling. Okay. So you want to see uh, implants. Hmm? No, not the guide, but implant guide tubes. Not showing.
Hmm? Hmm. No. It comes in the implant section. Normally it comes in the implant section. Okay, I'll show you the other one. Don't know why it is not coming. Shankanti Ravi. The second case we'll be discussing after the surgery of this one. वो दिखाना जो गाइड पड़ा ना वहाँ पे और एक ट्वीजर देना है या एक ट्वीजर भी रख दो. Okay, like this is the second case, and here if you click at the implant section, so here software guide tube, guide hole diameter ये 5.15 आ रहा है ना, so it should be 5.1, right? And this height I was talking about it there, this height should be at least 3.5, right? Height of guide tube. Yeah. So less than that means your the drill will not be stable. It has to be minimum 3.5. So normally we keep it at 4 to 5. Okay. So this case we'll be discussing before the start of this one. So right now we are on this case. Yeah. Okay. So I don't know why it is not coming here, but it was planned like that. So entering off. Okay. So you see all the implants are nearly parallel to each other, right? And this is the offset from here to here. From here to here, it is 10.5 all the way. Okay. So now we'll be starting with the live stream of the case. So this one we need to close display capture and we need to on the video capture. Okay. And droid cam. Yeah, it has come. Hmm? Yes. Okay. So now I'll be showing you the guide we are going to use. वरना पेशेंट को बिठाएं, लोकल रखें. ओके, ये दिखाओ. Yes. Okay. So this is the sterilium solution. So we have put the guide here. You just need an immersion of 30 to 40 minutes into this. So this should be enough. Okay. So these are the guide holes and the guide. So this is made in a biocompatible material. So that is very important. You cannot make it in the regular resin that is used for making the models. This is a special material for making the guides only. Okay. So let us start with the case. उधर कौन लेगा? इंद्रजीत. वो एक्सपर्ट है ना? हैं? उधर पेशेंट दिखा ना. Okay, so who is doing this surgery?
Hmm? You and Indrajit, yeah. So you prepare the surgery. You prepare the surgery. Hmm? Yeah, he'll join later. You both of you prepare. We have 3 implants, one for each. Okay. ठीक है Yeah. So you prepare the surgery. फिर किसी दे दें बाद में, है ना? यहाँ पे ट्रेन कर ही दे किसी ओके जी रेडी हो हाँ जी सर। गुड 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 मॉनिटर भी ऑन कर दें सर्जरी तैयार कराओ बीटाडीन देना सो दिस इज द केस अब अपने अपने उसमें भी देख सकते हो यूट्यूब पे हैं ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰਜਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਸੇਵਡ ਰਹਿੰਦਾ YouTube ਤੇ so these are a little roots available which you need to extract okay so what should be the position of the patient yeah head and heart at the same level and feet should be slightly elevated that is the ideal position for giving any injection in the body to prevent syncope okay ये लाइट ही करना okay थोड़ा ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿਕ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ okay बस sorry बस so you need to go very slowly how much slow 0.1 per second. yeah 1 ml in 1 minute okay it should be that slow so I have this air bubble that you should be removing before inserting this syringe okay but I will not go that deep so very slowly slow injection is less painful to the patient and there are no chance of complications like toxicity because you are going very slowly and you do multiple aspiration all along the way okay now I am near the air bubble so I'll eject that out थोड़ा जोर लगना ठीक है ओके बस okay so this was infraorbital nerve block now we'll be going for the PSA block so for the PSA you feel the posterior border the surface of the maxilla and you go upward backward and inwards okay upward backward and inwards now I'm getting a little aspiration so I'll withdraw aspirate again and deposit the solution. There is no need to discard the solution.
if it is still clear, to tell you the positive aspiration. Okay. और कोई दिखा, उधर दिखा दें. ओके. बस जी औखा काम हो गया है. हाँ, टीकियां ਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ. लग्जेटर दे देना. एक पेरियोस्टल देना. पेरियोस्टल. बंद करना. बंद करो. There is no space for the processing. Okay. So what we'll be doing, we'll be grinding the bone a little and placing the implant deeper. Okay. इंद्रजीत ने बुलाना है. या बंद करो जी, बंद करो. यस. ये ऑक्लूजन दिखाना है ना जी. इधर की वो लाइट दे रहा है. रुक जा. लाइट ओपन. इन्होंने ऐनक लगा. ऐनक लगा. So we are going to use the Kim light. Kim light दिखा. So this is the Kim light we use for intraoral illumination at the time of surgery and magnification. The magnification here is 2.5. Okay. अच्छा. Close, please, close. Yeah. So you see there's no space for the last molar. That is why we'll be placing the implant a little deeper and doing a little osteoplasty at the time of implant placement. Open. Yes. So now these are small roots. Luxator देना.
So whenever you are using luxator, always use the fingers as guard so that it doesn't slip. Mosquito देना. Okay. So this will be the only wound we have created. खोलो जी खोलो. ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇ ਚੁੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਉਤਾਰਨੀ नहीं नहीं ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਾ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੰਦ ਕਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਨਾ ਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਟਰ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ
Okay. ਤੁਸੀਂ इधर आ जाओ. मॉनिटर ऑन कर दो. आशु मॉनिटर ऑन कर. मॉनिटर लगा दो. एबन. So heart rate is okay. And we'll just check the BP also. इसमें क्लोजअप कर लो प्रिपेयर करो बस प्लीज. क्लोजअप कर दो. ओके. Okay. ये दिखाने की जरूरत नहीं, ये तो आ ही रहा है. दैट इज कमिंग. साथ साथ वो चेक करते रहो यूट्यूब पे ठीक आ रही है ना. गाइड देना मुझे. गाइड. वॉश करो.
So you just wash the guide with the normal saline. Okay, so because it is dented, so this fit exactly, and the software will will eliminate all the undercuts that were there. So that is why there's never a problem with the fitting. Okay, and you can see from these windows also the seating of the guide. Okay, so these windows will tell you that your guide has seated well, and there's no rocking, so it means it is perfectly fitting. Okay, so first we'll be doing the implant for the 2 to 5, right? Okay, so the first thing is the tissue punch. So these are the tissue punches, these one. So you just need a 3.5 mm tissue punch. Okay, you don't need 4.5 for a 4.5 mm implant. So the smaller size is enough, right? And this tissue punch will run at a speed of 800 rpm only. And you just need to go like this and bury it fully till the time you hit the bone. Okay. Is it also two-way texture? Eh? No, it is a little looser. So all the drills that you use will be activated once you are inside the hole. Not like the normal drilling, you first do that and then go in. You just have to go in, touch the tissue, and then start the activator. Okay. So we are starting with the first drill, not the drill, just the tissue punch. And because your handpiece is going to touch here, so it's better that you use the drill extension. Okay. Because when your handpiece touches, the direction it goes in a different way, so you may not have the actual direction of the drilling. Okay. Yeah. Could please? No. Not this one, not this one. छोड़ो, Opening. ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, निकाल लो. So because these are the posterior teeth, so you might not get the opening. Just be careful that you are not touching anywhere else. Okay, you rather go from the left side. Okay, be a lefty. Yeah. Yes. Suction, please. Okay, so the moment you touch the bone, it won't go further. Don't need to go further. Okay. Yeah. Remove kar lo. So we'll be doing it one by one so that you all can understand. So we'll remove it and then no. चलो दिखाओ. No, it is there. Tissue punch हो गया. So you can remove it. Not visible. A light on करिए ना. Yes. Yeah. Even if you don't do this, the subsequent drill will remove this tissue. So you don't actually need to do this. Okay. So this is the tissue punch. Right. Now we'll go with the next drill. Next drill is what? पिछली बार बताया था सबको. हैं? 5.2, 3. नो, इधर दिखाओ. वो पकड़ो. 4.8.
Next drill will be, it will be the flattening drill. Flattening drill is the first drill that you will be using. This one. Okay. So it is mandatory to use the flattening drill, otherwise your subsequent drilling may not go in the desired direction. Yes. Yeah. ये हाथ हाथ पीछे हाथ ऐसे ये मैं पकड़ता हूँ सिर आ रहा है डॉक्टर साहब आपका वीडियो को दिख नहीं रहा ना यस हाँ चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ दो छोड़ दो Show hand, which one doing? So you need to do this like this, pumping action. Okay? And now why it is not progressing? Because it is already clogged. You see? Yeah, with the bone. It is already clogged, that is why it is not advancing. So you need to clean this before you advance further. Okay? Bone collector? I don't think so. So I'm removing all the tissue from here. Now it will go further. ये lock नहीं है। Yes, come. So you need to bury this fully till the shoulder. It has got a stopper, so you need to bury it fully. Yeah. Go in, come out. Go in, come out. Yes. Yes. Okay. So again, you have this much of the bone here. You see? Yeah. इसको bowl देना. We can collect the bone. Saline पा दें. ना एक बार फिर कर लो.
So you need to remove this bone before you can drill fully till the, now it has gone till the stopper. बस निकालो बोलो. Okay. So the next drill will be, next drill कौन सी होगी? 5.1. 5.1 नहीं आपने बोलना, वो तो ये सारे 5.1 नहीं है. So you need a initial drill. Yeah. All this section is 5.5 mm barrel and this is 5.7. So this is the initial drill. You just need to establish 2-point contact, only then start the drilling. Okay. रुको 2-point contact हो गया. चलो. Yes. See that तो आपका आ रहा है. That आप ध्यान दो. You come on this side. I think क्योंकि इसकी direction ऐसी बन रही ना. So this was 5.1. Now, no, not 5.1. Initial drill. Now the diameter is 2.2 and now we'll be using 2.27 drill. आज इधर आ जाओ. Come to that side. इसमें आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, because the guide is there. You just need to make sure that you have a 2-point contact. Yes. Yes. बस हो गया. Okay. You don't need to see it actually. आ जाओ इधर, बिना देखे बस फील करके करो. इतना ज़्यादा उधर जाने की जरूरत नहीं. Okay. So now what was the size here? 18. Yeah. So after 7 mm we are going for the 10 only. We can't just go to the 13 because then you won't be having a 2-point contact. You need a 2-point contact, so you need to go stepwise. सिर आ गया फिर आपका. ये थोड़ा लॉन्ग हैंडल पकड़ो, लॉन्ग हैंडल. यस. और अभी भी रुको. हाँ चलो. यस. गो इन कम आउट. यस. गो इन कम आउट. हाँ, गो इन कम आउट. नहीं, चलते डोंट स्टॉप इनसाइड. बस हो गया. कम. नहीं, डोंट स्टॉप इनसाइड. ओके. एक saline पाके एक syringe दो जरा. So the assistant should be actually putting the saline here because it's very easy to overheat it as saline is not reaching the area. Saline दो पहले. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, so whenever you are coming out you'll be pushing the saline, so just make sure that you come out for the saline to go in. Okay. Now so this is 13. 2.213. Yes. छोड़ जरा. छोड़ दो इसको. Yeah, you come from this side. Yeah, now you have a 2-point contact. एक बोन पे और दूसरा गाइड में. Yeah, come out fully. Yes. Yeah, good. बस हो गया. Okay. ठीक है बहन जी. हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा था. Okay. So now because this guided kit only has drill till 13,
but we want to place an implant of 18. So if the ostrom is watching this live video, they should be making guided drills for the longer implant as well. Okay, so normal wali kitla. So we will be using the normal drills for the 18 mm slot. Two point two without shoulder drill though. Yes. Yes. So we are using this drill 2.2 for the 18 mm. Okay. I think it's a 15. Yeah, 15 तक ही निशान होते हैं. So I am using it like this to go further up because you have the direction. Yeah, that is it. That is it. Okay. 2 point. अब next drill ले लो. हाँ जी. पानी आ गया मुँह से. Okay, कोई नहीं. Now 3.5 13 drill दो. So the same way we'll be going for the next size. After 2.2, guided go up. Now we need guided drill 3.5 13. That is the maximum length available in the kit. So the one guide kit only has drill till 13. So if you want to place a longer implant, you need to improvise like this. So this is 3.3 13 now. 3.5 13 drill. छोड़ो जरा. Yes, now I have the 2-point contact. Yes. So when you go in, come out also. Come out, come out, come out. Come. Don't stop, don't stop. Come out. You have to pump it all the time. Yes, this is the right way of doing it. That's okay. Okay. So now I have the 3.5 osteotomy. अब वो दे दो मुझे drill. इसमें लंबी वाली 2.7 वाली drill दे दो. And I will be using 2.7 drill for making 18 mm osteotomy. So this is a little tricky that we are 2.7 that we are using the regular kit also because we intend to place a longer implant. Okay. Dina? Okay, done. So this is enough. The bone quality that we saw there in the software, it is not very that hard. Sometimes you click on the area where you have the cortical bone. Okay, now 4 13 की drill दे दो. Like 4 13 drill. You don't need a longer drill now because this is enough for placing a 4.5 18 implant. 4.5 18 का implant ले आओ. Come out. You don't have to start and go. You have to go in, establish 2-point contact. Only then you have to start. Okay. 4.5 की दे दो drill. 13 ना दो, छोटी दे दो. 8.5 दे दो.
So we are, because the bone is soft, so we are not drilling. Yeah. You have to establish the contact, only then Then start. activate. Yeah. It is not like normal implant placement. Establish contact. अभी नहीं हुआ. नहीं हुआ. Yes. Now. Yes. Bas. Do not remain inside the osteotomy for long when it is your final drill. Okay? Yeah. Because then you will be oversizing. 4.518 the implant there. Now the fixture driver from the guided kit. Fixture driver लो. Regular वाला. Where it is written R. दूसरे पे लिखा होगा RW. RW नहीं लेना आपने. If it is 5.7. दिखाना RW भी. हाँ, that is, yeah. दिखाओ. इन्होंने कई बार इंटरचेंज कर देते हैं. Yeah, it is okay. Okay. Now implant दो. Implant. So you need to wash this area thoroughly. Saline पाना है जी. Same. So guided doesn't mean कि it is super easy. It also has a learning curve. You need to know all this. No implant. Implant. How? Come here. So this is 4.518 TS3 or 4? TS3? TS3. प्रोग्राम कर दीजिए. मेरे से आ रहा. ओके. इसमें रख के उसको एक्टिवेट करो तो वो पकड़ लेगा उसको. तुम रुको रुको, यहाँ दिखाओ ना. चल हो गया निकालो. Okay. Now you can go in. देखो दिख नहीं रहा लोगों को. Yes. 4.518 ना. Okay. Now you activate. Yes. Go in. Okay. But it should go a little further. दूसरा जगह chocolate. It should actually bury till the yellow mark before you start using the other one. Now I'll be using the fixture driver. I think torque is too much. Yeah. तो 4.5-13 वाला भी ड्रिल यूज कर लेते हैं. So let us remove it because the torque has come too early, which we do not want. 4.513 की ड्रिल देना. 4.5. This is what we saw in the during planning. Program. इसको पकड़ के रखना भी. वो देना माउंट.
माउंट है देखिए ओके यूज करो 4.5 13 की ड्रिल so we are using the next drill 4.5 13 स्पीड बताती नो चलो या कोई नहीं निकल फिर रुकना नहीं है बीच में कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट बस हो गया जी दर्द है दोनों अच्छा एक मिनट इसमें उधर पा दे ठीक है बिल्कुल एक बार बीपी चेक करो दोबारा पेन तो नहीं हो रही ना दोनों हैं ओके इधर है पेन हाँ कोई गल नहीं कोई ना डरो कॉर्टिकल ड्रिल है so I'm using 4.5 cortical as well okay because the torque was too much okay right now we'll be placing the implant again स्पीड कम करो ठीक है बीबी सब कुछ ठीक है हैं ब्लड प्रेशर भी ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ so whenever you have this much of the torque in the start of the placement you need to remove the implant and use next drill and the cortical drill if need be then you'll be getting the optimum torque okay so these mounts you need to keep in your kit so that whenever this situation arises you can use them okay now the fixture driver now come now I am having torque but not too much yeah yes okay good yeah it's okay karo karte ho. So this yellow part should be buried fully yeah then you will be in the position where you actually planned it okay too much torque is also bad too little torque is also bad because yeah it's okay because finally at the top our osteotomy is only 2.7 yeah and this implant is also tapered so that is okay bas. So finally at this position if you are getting the torque it is okay but not in the beginning कि शुरू में इतनी torque आ गई then you need to do the yeah next drill and bas okay and this yellow part should be towards the buccal like you keep the
dot on the buccal side. ओके जी, हाँ जी भैन जी, ठीक हो? गुड गुड गुड, बस बहुत बढ़िया चल रहा है काम। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ब्लड प्रेशर भी देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, कम किसी उत्थे किट पे आ जाओ। अमरजीत यू कम। So now we are placing the last one first. No, ये नहीं, इधर रख दो, उधर रखो। So the 27 implant was how much? What's the size for 27? 5, 8.5 na? Huh? Yeah. So इसमें we don't need the tissue punch. You just use this flattening drill. Yes, flattening drill दो, wide वाली, जो wide वाली चाहिए हमें flattening drill। हाँ, दूसरी साइड वाली। Yes, not the one we used earlier. Second one. That is for a 5.7 guide drill. Yes. ये सिर पर ध्यान रखिए। Direction. Yes. Okay. Yeah. 27. Yes. सिर आगे रख सकता पूरा। Yeah. हाँ, इतना पास से मैं देखने की जरूरत नहीं है। You can do it from the, yeah, go in, come out, go in, come out. Yes, it's done, done. Come. Now you have some bone, but it is a extraction socket. That is why you don't get much. Now initial drill for the wide. अब आपने जो second वाला है ना, दिखा अवतार। Yeah, you have to use the drills from here only because it is the 5.7. yeah 5.7 barrel initial drill. Yeah. Okay. सिर तो ध्यान। Yes. हाँ. Yes. Yeah. Come out. हो गया। अब 7 के बाद आपने देना है 8.5। 8.5 यूज किया था ना हमने उसमें। 8.5, 2.2 8.5, then 3.5 8.5, then 4 8.5, then 4.5 8.5, and then finally 5 8.5. Yeah. No, पहले 2.2 वाली दो ना। 2.27 यूज की ना अभी, 8.5 दी थी। 2.2 8.5 दो पहले, then 3.5 8.5। 5.1 size. इसको भूल जाओ, ये खत्म काम है। नाउ यू हैव टू यूज दिस ओनली। या 2.2 वाली यूज कर ली 8.5 की। अच्छा, ओके। सो दिस इज 3.5, ही इज राइट। तो दूसरे वाले में 2.2 नहीं है, तो इट इज ओनली दिस वन। यस, ओके। So 3.5 8.5 doesn't have a 2.2 drills. उंगली थोड़ा पीछे, सिर पीछे। हाँ, yes, okay, yeah. So 3.5 8.5, now 4 8.5, 4.5 8.5. Actually the jump is more in the
wider drills, because normally there is a softer bone, so they do not have a 4 diameter drill after 3.5, and they do not have 2.2 to start with. Yeah, it starts from 3.5. Okay, this is 4.5. Now 5, 8.5. इसमें 5.5 भी है अपने पास, इसमें 5.5 तो नहीं है इसमें, इन दिस वन, हाँ 5.5 लेके आएंगे, आप पहले दे दें. ओके, ओपन, यस, चलो, ओके, कम आउट, दिस वाज 5, ठीक है, 5.5, यस, मिला करो, कितना हो गया? 5.5, 8.5. Now we may use the Summers instrument to make it 10. 5.5, 10 देखने का. Summers instrument लाओ. Summers instrument. So according to the plan, the size was 5.5, 5 into 8.5. Now we are going for 5.5 into 8.5. Now we'll see if we can go for a 10 mm. Okay. So here I am feeling the floor, right? Magnetic mallet. So let us use the magnetic mallet to lift the sinus to 10. So you can use these instruments and yeah, through the guide in the same hole. Yeah. Now hammer किथे? अवतार हैमर भी दे, नहीं दूसरा ये था, वही हैमर देना, just to demonstrate. Yeah. So you can use these Summers instruments. No. पकड़ो इसको. Yes. थोड़ी ठक ठक होनी चाहिए, डरना नहीं. बस बस. It is gone in. बस बस. Okay. Or you can use the magnetic mallet. Magnetic mallet दिखाता हूँ. इसमें दे. 5.5, 10 मिल गया. So we'll be placing 5.5, 10. Our drilling was for 8.5 only, but will be placing 5.5, 10 after lifting the sinus. Okay. Hold the 5.5, 10. खोलो जी, खोलो खोलो खोलो. Yeah, पकड़ो इसको, पकड़ो. Yeah. हाँ, प्लांट खोल दो. So these are the normal Summers instruments. You just need to break the sinus floor so that you can engage it. की गल है?
2 नंबर दे, 1 नंबर ना खोले, हाँ 2 3 4 खोल दे, दो 3 भी लगाओ फिर इधर लाओ come. So this is the magnetic mallet. This is number 2 elevate, number 3, number 2 elevate tip. So just to demonstrate you, okay, वो दिखा दे, ये पैडल दें. Now with this the patient doesn't feel the hammering. Okay. Number 3 is just to show you. Okay, RBG करा दे, check कर ले. You just show on the RBG. वो ना दिखा दे. पीछे ना थोड़ा साइड भी होना पाना. Okay. Okay. Okay, चलो hold the implant. Now this was just to demonstrate the use of magnetic mallet. लो implant लो. हाँ ये दे दो, implant भी दे दो. ये नहीं अब वाइट वाला चलेगा ना, ये भी वाइट वाला देना बाद में टॉक रेंज के साथ जब. So 5.5 into 10. Previously it was 5 into 8.5. No. मुकुलना जी मुकुल लो पूरा. शाबाश. यस. सो यहाँ भी 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करना आपको है. हाँ चलो सिर पीछे कर लो. बस इनफ 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 इनफ. डू नॉट गो टू डीप विद दिस. ओके. दूसरा दो इंस्ट्रूमेंट. टॉक रेंज देना. So we are getting a torque of around 30. So that is okay. करो. Yeah. You can go a little deeper also. Yeah. sit. Yeah, हो गया बस 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 बस. अभी कितनी आ रही टॉर्क? Yeah, it is 30. That is okay. कोई गल नहीं, कोई नहीं. जी हाथ नहीं ऊपर लेके आना प्लीज. कुछ नहीं हो रहा, हो गया काम बस.
Okay, so now 2 implants are done. We are going for the third one. फटाफट दे टिश्यू पंच दे जल्दी दे पकड़ इधर टिश्यू पंच हाँ दूसरे वाले में से छोटा हाँ ठीक है 5 या 4.5 इसको 800 करो स्पीड को ठीक है चलो sit picture that's all. Yes, so this is a tissue punch for 2/6 implant. Yeah, चलो चला दो बस ठीक है enough. लो अगली दो ड्रिल लगाओ अगली. Now this is a punch. Flattening drill लगाओ. Okay. Now you understand the sequence? Yeah. Yes. कोई नहीं बस हो गया लास्ट है पंजी. We are almost done. चलो बस निकालो you have the bone here. Yeah, जरूरत नहीं है ठीक है हो गया. Now 3.5 वाली से हाँ इनिशियल ड्रिल दे दो. इसमें साइज क्या था? हैं 5 8.5 5 10 है. एट पॉइंट फाइव हाँ 8.5 है ना तो 10 करनी. बस ठीक है. फाइव 10 वो देखने के लिए जो भेजा था आपको 2/6 में 8.5 हाँ 5 implant diameter. वो 2/7 में था 10. ओके चलो दे दो 8.5. ये कौन सी 3.5 8.5 हाँ चलो इनिशियल कर ली. हाँ जी ठीक है. चलो ओके हाँ 4.5 8.5 दे दो. फोर पॉइंट फाइव 8.5 ना हाँ कोई नहीं लोकल देना थोड़ा. 4.5
8.5 ना, यहाँ बोन सॉफ्ट है ना अपने पास है, 5.5 10 है, और दिखाना इसके जो उसका क्रॉस सेक्शन दिखाओ। तो दिस वाज 4.5 8.5 ना, हाँ, तो यहाँ बोन सॉफ्ट है, तो लेट अस अंडर ड्रिल सो दैट वी यू गेट गुड फिक्सेशन है। अब इसको हम लिफ्ट करते हैं बस, इसकी ड्रिल देना, 4.5 वाली जो लास्ट ड्रिल है वो देना, जरा चेक करो। नहीं 5 तो है, उसका क्रॉस सेक्शन देखना कि 5.5 चला जाएगा तो 4.5 इज ओके। हाँ, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाओ, ये पिछले का है, ये नीचे वाला है, यस यस यस, नहीं 5 ही रखते हैं। कोई नहीं लो, लो, एक डेप्थ गेज देना, आई थिंक 8.5 ही रहेगा, है ना, या 8.5 ही करना, ओके। 5.5 8.5 है देखना, नहीं मैं इम्प्लांट की बात कर रहा हूँ, 5.5 8.5 है, हैं? या लेना, तो अभी आप 5 8.5 की ड्रिल कर लो, फिर 5.5 8.5 का लगा लो, 5 7 की ड्रिल दो, 5 7 दो, आ गया ना, 5.5 8.5, खोल दो खोल दो। So we are placing 5.5 implant in a 5 diameter osteotomy. बस 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 लास्ट ही है, we are done. नो इम्प्लांट ले लो उसमें, निकल, बस निकालो। अब दूसरा टॉकनेच ले लो, निकाल दो। पहले उसको ना, पहले उसको फिट करो, फिर लाइट। यस, देखो जब when you are going in, छोड़ो,
इसको पहले चेक करो ना, इन शुड बी बाहर होना चाहिए। हाँ, जॉयस्टिक से करो, जॉयस्टिक से, या हाँ करो करो, ठीक है, ओके ओके ओके, गो गो गो, okay, go. So we are getting good torque because our last drill was 5 only, and we are placing 5.5 mm implant. Okay, the previous one we used 5.5 as the last drill. So we learn from that. So your final judgment of bone quality is during surgery only. Okay, yeah. So this yellow mark should come on the buccal side. Yeah, we have good torque. Yes. Okay, yellow mark on the buccal side. मुझे इसको दिखा दे ना, सेक्शन करो जरा. This yellow mark should be on the buccal side. Okay. Now you remove it. Okay, video le. So this is what you get. The RBG कराओ. You don't need to worry about the depth of the placement because it is already decided. Now, कराइयो आरबीजी अवतार जी आरबीजी अवतार RBG होने लग गया. ਉਹਨੂੰ चेंज कर दे. नहीं जी, सारे सारे आने. चल इधर नहीं दिखा दे, दिखाना. ओके, ठीक है. Yeah, you can go a little more in, so that you engage the cortex. Yeah, little more in, because this one we didn't plan. We plan only 8.5, and we are placing it 10. Yeah, so you can go a little more in. That's it. Okay. So now we will be engaging the cortex. Lekari Karviji. So you need to know the analog before you go for the guided. Yeah. पहले वाला दिखा दे. First दिखा दे. First वाला दिखा दे. Last वाला दोबारा दिखाएं. Okay, so this is the 4.5 18 implant and the 2.7. Okay. Yes. Feelings को देना. ये करना सेक्शन. हाँ, 5 दे दे तीनों. 5 mm diameter, 5 mm height. 2.5 वाला जरा देना. 2.5 should be 4.5. 2.5 4.55. 2.6 2.7 5.5. अपने लिए इम्प्लांट लगाना है. ये चेक कर ले बाहर पहला. So whenever you connect the healing screw, you do it like this. Press it and then check before you actually go inside the mouth. Okay. RVG ओ देना. Rexidin रुको. Rexidin. ज़्यादा है. छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो.
5 7 दे दो। हाँ। हम्म, खोलो जी। ये भी 5 7, दोनों 5 7 दे देना। हम्म, ये छोटी है, छोटी है। छोटी वाली छोटी। सो ऑलवेज कीप दिस गार्ड। जब भी आप ये छोटे इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हैं। चलो बताओ। सो फर्स्ट कनेक्ट, दिखाओ कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है। यस, प्रेस इट हार्ड, या नाउ यू चेक, उल्टा करके चेक करो। यस, बिफोर यू एक्चुअली गो इन। चलो, ओके। ये बंद करना जी, बंद करो, खोलो। वो वहाँ 5 ही लगेगा पीछे वाले में, क्योंकि वो नहीं है ना, स्पेस नहीं है। यस यस, खोलो जी, खोलो खोलो। 5 5 वाला दिखाओ। ये आप बताओ। ਤੁਸੀਂ इधर आए, ਤੁਸੀਂ हीलिंग स्कूल लगाना। लगाओ अपने। कोई नहीं, पहले बना लेना पोजीशन। पकड़ रहे हो? नहीं, फिर यू आर इन दी सॉकेट ओनली। पकड़ रहे कि नहीं? अच्छा, ला दे। बुझा अभी? प्रेस ना करना, होल्ड करके जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आप उसमें हो ही नहीं। छोड़ो छोड़ो, मुझे दे दो। यू आर नॉट इन दिस स्लॉट। छोड़ दो, निकालो। ठीक है, इट्स ओके, पकड़ा दो। हाँ ठीक है, आ जाओ डॉक्टर साहब। बंद करना बहन जी, बंद करो। ये टच कर रहे हो ना? हाँ जी। ओके, कोई नहीं। ओ, 4 लगे। कोई नहीं, बस ऑलमोस्ट हो गया। 4:30 लगा रखता हूँ। 4:30। हम्म, खोलो।
गांधी आ गए, उन्हें बिठा के लोग रखो। और वो हरविंदर सिंह, बंद करना जी, ठीक है। हाँ जी, टच कर रहे थोड़ा। अरे कोई नहीं, वो थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करते थले तो ना बहुत ऊपर ऊंचा आया। हाँ जी, उन्होंने कर दी ग्राइंड। आ जाओ, खोलो खोलो। ये हैंड पीस लगा के ना नीचे का वो। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, दिखाओ पहले, पहले मुझे दिखाओ, जल्दबाजी कोई नहीं, दिखाओ उल्टा करके। हाँ ठीक है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, काली नहीं, चल। फंस तो नहीं रहा कहीं? दिखा दिखा दिखा, मिरर देना एक। वो ठीक है। इधर आशु, हैंड पीस लेके स्टोन दे दे और पेपर दे दे, ग्राइंड कर लो। एक बार फाइनली दिखा दे। So this is the final picture. All these 3 implants placed with the guide. No no suturing, no incision either. ऊपर देखना है जी, यस। हाँ, नीचे दिखा दो, दिखा दो। बस जस्ट उसको ग्राइंड कर करके इनको फ्री करो। गांधी जी ने भेजी। नहीं तो
Okay, so this is the second case for today. The patient is already having these implants, and now we are planning a full mouth rehabilitation. Okay, so this is the old implant. It's add-in 1/6 area add-in implant. So these two are also, I think, add-in. Now we are planning to place these 5 implants in these positions. Okay, so that we can actually make a full arch bridge later on, right? So today we'll be doing this one, 1/5 and 1/7. Okay, so and these two will be doing in the next seminar. So today we will be doing these two only. So let us see the cross section of this area, 1/5. This is the cross section, and you see we have ample amount of bone in height and width. Okay, you need to see this in the tangential section also. This is the tangential. Okay, yeah. Now enough width is available for a 5 into कितना है? 5 mm implant, 15 mm. 5 into 15 implant, right? If you do not have 15, you can go for just 13, 5 into 13, or you can actually go for a 5.5 also, I think. Replace with the 5.5 diameter. Okay, so even 5.5 is good enough. So whatever size we have, we'll be going for this one. So 5.5 15 or 515, and if 15 is not there in your inventory, you can go for 13. That is good enough. And let us see the bone quality here. कैसे देखते हैं bone quality? हाँ, पहले इसको हम करेंगे हाइड करेंगे, हाइड द मैक्सिलरी इम्प्लांट. नाउ इस एरिया में हाइड द implants, all the implants, and now we'll be going to the this. So this shows Hounsfeld units here, 1216, 1089. So it means this bone is actually D1 to D2 bone type of bone. This is 1/5 area. Density you see here, it is minus 1000. Yeah, this is minus 1000, and here if you go, you actually see it here. The value will come here. Okay, so when I keep the cursor here, the value is, this is 5.0. This is air. Density level is 112. Air should be 0. Minus 177. Okay. I think water should be 0. Air कितनी होती है? So it is less than 1. So you can see the density level. So in the area you are placing the implant, it is almost D1 bone. So you do not need to under drill. You have to drill it fully. ठीक है, पूरी ड्रिलिंग हमने करनी है. And if you talk about, अब इसको वापस लाते हैं. Now we go for the 1/7 implant. 1/7 implant also the bone is wide enough. The size here is 5 into 13. You can actually go for a 5.5 into 13 as well. The 5.5 13 if you have the size. Okay, but otherwise 5 mm diameter is good enough. 5.5, 6, 7 diameter implants are only rescue implant. They are not intended for the first use, but here you have enough bone available, so no problem. Whatever size you have, 5 mm diameter, 5.5, you can go for that. Okay, and later we will go in the next seminar for this implant. So this is around 4 into 15 size. We'll talk about it later. And 2 area is 3.5 18. 2/7 area after removal of the tooth will be
5:13. Okay, so this we are not doing today, we are only doing these two today. Okay, yeah, because the patient is hypertensive. He had this bypass surgery done 3 4 years back, so we do not want to do a elaborate surgery in one go. Okay, 2 implants today, two in the next seminar, or three in the next seminar. And we do it in the weekday. In the weekday, yeah, we can. Okay, sir. Huh? So you tell me later. Okay, okay, we can do that. Okay, so let us start. So now we display capture off and video capture on. Okay, now भी tech savvy हो गए. चलो किसने करना है ये केस? करो तैयारी करो तैयारी. उन्हें बुला के ले उनका तैयारी करा फटाफट. हाँ.
हरविंदर सिंह नहीं आया पेशेंट हैं किधर अमरजोत दा इन्हां दी पर्ची दे उत्ते कुछ लिखा है ये मेरे ख्याल से तीन प्लांट लगे ना तीन प्लांट एक भी 60 लिख दे इनको 60,000 है कौन देखा कि वो खोल दे ये ग्लव्स खोल दो बाद में करेंगे ना फर्स्ट यू रेज द फ्लैप इधर ना मैग्नेटिक मेथड दे दे एक्सट्रैक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक मेथड और एक्सट्रैक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट है इंसिजन दी हाँ जी खोलो गांधी जी शाबाश करिए इसको करिए इसको तीनों खोल फोन कर ले कितना लाइव लाइव यूट्यूब से देखो यूट्यूब में आ रहा है देखो कर लिया इसमें देखो ये और मोबाइल वाला कितने अच्छा चल रहा है ओके so this is extractor number 1 so we'll be using it to extract the tooth now आ जाओ सेक्शन करो देना सेक्शन ठीक हो नहीं रही चेयर डाउन करो थोड़ी now retractor low so we have raised the flap now we tried removing this tooth but
It needs a little manipulation. ये पकड़ो, इधर आ जाओ. So I'm using the magnetic mallet to remove these roots. थोड़ा चेयर रेस कर दो. देखो जहाँ काम कर रहा हूँ ना वहाँ पे चाहिए सेक्शन. यस, पकड़ो. हाँ. Okay, with the use of the mallet, you have no fear of slipping your this luxator. Okay, normally you always fear that if you apply pressure, it might slip, but here that is not the case. Root for सब जना. थोड़ी सी ट्रे दे विच है. खोलो जी, खोलो गांधी जी. शाबाश. नहीं रूट फोर्स है. नहीं होने यूज इन्हों को यूज कर रहे थे उन्हें. खोलो जी, खोलो खोलो. ओके, अब पिछला करो. So you just dig around the root in the periodontal ligament space, so that loosens the root and you are able to remove it. Luxator देना. हाँ जी, खोलो जी, खोलो. शाबाश. लो करो, लगाओ. So you see the use of magnetic mallet in many ways.
sinus lifting, even implant osteotomy you can do with this. I'm sure you can. Okay, चुकलन ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਟ ਸਵੀਟ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। Okay, so now in the extraction socket of 5 we'll be drilling in the distal socket wall. Okay, because we need to maintain a distance of 3 mm between this implant and the implant we are placing. Okay, so you already have an implant here and one here that is actually the crown is mobile, which need to be changed. So you will be drilling in between them. So I'll just make a initial drill. Then retractor लेना। हाँ जी खोलो पूरा गांधी जी। या यू नीड एक्सटेंशन, यहीं पे रुक जाएगा जाके। So whenever you see that your handpiece might obstruct, use the drill extension. खोलो जी खोलो पूरा खोलो गांधी जी। गुड बहुत अच्छे। So you will be drilling along the palatal socket wall as well, because you need to be more palatal than buccal. And more toward the distal side. No, वहाँ भी implant है actually. So let us check on the RVG. हाँ जी खोलो जी। No. जो दूसरे कैमरे से वो दिखा देना है, जो भी आरवीजी है। हाँ जी खोलो जी खोलो शाबाश। So you have enough space है, ठीक है, लो करो। All along the palatal wall है, मीजियो डिस्टल की परवाह न करो। Apically bone है that we have already seen on the CBCT। ये कहीं भी नहीं, ये हाँ चलो आपको स्लिप कर गया। यू हैव गॉन बक्कल नहीं आना हमें। देखो तो जब भी यहाँ ड्रिलिंग कर रहे हैं खोलो जी, यू नीड टू मेंटेन ए प्रेशर फ्रॉम बक्कल टू पैलेटल लाइक दिस। हाँ ये इधर आ गया तो यू आर क्लोज टू दी बक्कल वॉल, ठीक है। तो ये पूरा स्टेबल हैंड होना चाहिए, तो यू हैव टू गो लाइक दिस। चलो ना फिर आ गया, स्लिप कर गया लेट मी ड्रिल छोड़ो। हाँ जी खोलो जी खोलो। ये हल्का सा मैं देख रही हूँ। आई हैव मेड इट ए लिटिल बक्कल टू पैलेटल सो दैट डजंट स्लिप। ओके मुँह खोलो जी मुँह खोलो। जब इतना चलेगा फिर आप सीधा कर लो, यहीं पे रखना। Little from buccal to palatal, okay? Yeah, go in, come out, go in, come out. ये एक्शन रखना है हमेशा। Yes.
यहाँ काफ़ी हार्ड बोन थी ना, अभी हमने देखा। ओके, बस बस लेट मी चेक। रहने दो, बस 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 छोड़ दो। ये आरवीजी कराओ, खोलो जी, खोलो खोलो। ये आशु 5 13 नहीं आना है, 4.5 15 ले आया। 15 था ना, इसमें 15 आ रहा था, 515 तो 4.5 करते हैं, बिकॉज मीजियो स्पेस इज नॉट इनफ। बक्कोलिंगुअल होगा क्रॉस सेक्शन में, बट मीजियो डिस्टल इज नॉट इनफ, इसलिए 4.5 विल बी दी आइडियल थिंग। 4.5 15 लाइन नो। No, so we're checking on the RVG. नहीं अपन की वजह से थोड़ी बन रहा है। ले अपन क्या कर रहे हैं? नहीं आ रहा, दूसरी लाइन। ये एक्चुअली इसका ट्रिगर पॉइंट है, तो मेरी उंगली के कम से कम 50-60 एक्सरे हो चुके हैं। तो ये सेंसर को ठीक कर देता हूँ। चलो तो क्या हो गया? फाइव खोलो जी। इधर करके मॉनिटर भी लगा दो। नो नीड टू गो लिटिल डिस्टल है ना, थोड़ा डिस्टल जाना पड़ेगा ना। हम्म, 4 का ही लगाना पड़ेगा। हाँ जी, खोलो जी खोलो। हैं? हरविंदर सिंह का मैथ्यूस मैथ्यूस हरविंदर सिंह का करो। कौन था आपके साथ? ये ले Ashok 415 there, because the mesial distal space is less, so we have now decided to go for, that was the initial drill only, no? That this is 3.515. छोड़ो छोड़ो चलो, हाँ चलो। हाँ बस कार्बी भी कराओ। 415 की दे दो। ये साथ वाले क्राउन की वजह से
we have a little constraint. ये हैंड पीस देना जरा. This should have been done before. So I'm grinding this overhang with this to cantilever because it is not allowing our drill to move. खोलो खोलो जी. इस लाइन पाओ जरा, सिरिंज भरो. खोलो जी. लो. हाँ जी खोलो जी खोलो. चलो. बस बस बस. और भी जी कराएंगे. ठीक है 4-15 ले लो. 4.5-15 का इम्प्लांट ले. यहाँ 4-15 लगा दें. 4.5 आई है. 4.5-15. बस 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 enough. चलो वॉश कर दो. 4.5-15. Because the implant is too close, so we are going for the 4.5 in place of 5. Okay. Buccolingual width is not a problem. It's about the mesial-distal length. तो इस पर लगाते हुए डायरेक्शन वही रखनी है, बक्कल टू लिंगुअल, अदरवाइज इट माइट स्लिप.
on the buccal side. सीधा हाँ वॉश कर दिया उसको हैं खोलो जी खोलो खोलो ये डायरेक्शन है ना यस हाँ चलो या बस 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 चेक कर लें अभी जी छोड़ हाँ और टॉप रेंच दे दो आरवी जी कराओ जरा ठीक है डीप जाएगा काफ़ी है ना ओके इसको पहले कनेक्ट कर लिया करो इम्प्लांट के साथ उसको बाद में करो कनेक्ट ठीक है लो ये डिस्टल ज़्यादा जा रहा है तो आपको ये करते हुए ना छोड़ो छोड़ो जरा यू हैव टू पुल इट दिस वे ये ताकि इसको थोड़ा सीधा किया जा सके ये पकड़ो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन यू कैन एक्चुअली चेंज द डायरेक्शन ए लिटिल रुक जाओ गड़बड़ हो जाए एक्चुअली आई एम नॉट happy about the direction it is going from distal to mesial जा रहा है ना ये खोलो जी so you can actually ये सीधा हो गया ना थोड़ा उससे वो और खराब होता जाएगा करो so this should be the direction इधर रखो इधर यस नहीं घूम रहा छोड़ो ये सीधा हो गया ना हाँ या yes yes go yes so you can actually change the direction at the time of insertion also थोड़ी बहुत डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं that was grossly coming from distal to mesial ना नहीं जा रहा इधर बस्ती अड्डे जाना है हैंड ग्रिप लेके आना है ये करो हाँ 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 it was coming from distal to mesial छोड़ो 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 देख रहे ना आई एम अप्लाइंग अब ये करते हुए यू डायरेक्शन शुड नॉट चेंज हाँ ले आरवी जी कराओ आगे पूरा दिखा but it is okay now it is not going towards the root it's not converging to the tip of the other implant हाँ ठीक हो गया ना you need to go a little more deeper थोड़ा और जा सकते हो डीप करो करो हाँ नहीं
वो अगर हीलिंग स्क्रू में ऑब्स्ट्रक्ट करी तो करेंगे। TS3 है, यस दिस इज एक्चुअली 4.5 में TS3 ही अवेलेबल है। लो करो। भैया आप रिट्रैक्ट करके दो ना उनको, वो रिट्रैक्ट भी कर रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो ये लो, ये पकड़ो। यू कैनॉट बी रिट्रैक्टिंग एंड वर्किंग एट द सेम टाइम। हाँ, अब आप इसको इसकी तरफ ध्यान दो। यस, बस बस इनफ। ओके, एक हीलिंग स्क्रू दे दो। 4 वाला हीलिंग स्क्रू दे दो। हाँ, RBG करा। 4 mm diameter and 5 mm height. आगे चलो ठीक है, 4 का आप हीलिंग स्क्रू लगा दो। ओके, ये तो एक्चुअली इंटरनल कनेक्शन है ना, तो ये हीलिंग स्क्रू तो यहाँ जाना है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। दिस इज गुड बोन, जो क्रिस्टल बोन होती है ना, अनलेस इट ऑब्स्ट्रक्ट डोंट रिमूव इट। छोटी पकड़नी है, हाँ बड़ी वाली। इफ यू यूज द लॉन्गर की इट विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द माउथ। हाँ 4 रेक्सलिन दो। ना उसको पकड़ो। दूसरी साइड भी लगा दी, फिर मल्टी यूनिट बटवा लगा। Yes, yes, yes. Multi-unit, or if you want to make a cement retained, so because these are different systems ना, तो सबके multi-unit नहीं मिलेंगे हमें, तो I would prefer a cement retained process. Yeah, दिखाओ। ये क्या दिखाया है? ये आपने अच्छी तरह उसको पकड़ा नहीं, घूम के नहीं जाना है। इसके अंदर चूड़ी नहीं है कोई, देयर इज नो चूड़ी इनसाइड। आपको इसको सिर्फ दबाना है, एक्स को पकड़ के दबाना है। ये अगर नहीं पकड़ रहा है तो भी इसका वो खराब है, ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगा वो ना। और जो इसका ये पकड़ नहीं रहा। नो, यस, हाँ अभी भी ठीक, की में तो नहीं प्रॉब्लम। दूसरी और लंबी वाली की दो। हाँ की में दिक्कत है। अब ठीक है, रेक्सिडिन देना डाल दी। हाँ हो गई। मुँह खोलना जी पूरा, कोई ना करी ठीक। पानी पिया हाँ ये लंबी की है ना, इसलिए प्रॉब्लम। आशु इतना छोटी की दे दी। तो इसलिए नहीं जा रहा कि आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। जिस डायरेक्शन में इम्प्लांट लगा है उसी डायरेक्शन में जाएगा। छोड़ो छोड़ दो। ये देखो आपने डायरेक्शन ये लगाई इम्प्लांट की, ये इस डायरेक्शन में लगा है, तो ऐसे कैसे हेलिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इम्प्लांट लगा है इसको थोड़ा छोड़ना है हमें, तो वो पकड़ेगा अपनी तरह। और फिर ये लंबी की है, दैट इज़ वाई आई से कि यूज़ दी शॉर्टर वन।
नहीं पकड़ा, छोटी छोटी की आगे तो पकड़ो छोटी की। हम्म? नेहा आप क्या कर रहे हो, आप इसको जब करते हो ना, यू आर पुशिंग ऑल्सो, यू डोंट नीड टू पुश। आप ये करते हुए यू आर पुशिंग इट ऑल्सो। इफ अगर कोई इम्प्लांट आपका ऊपर से लूज हुआ है, यू कैन जस्ट पुश इट इन दी साइनस। ओके, तो हीलिंग्स को लगाने का मतलब है कि यू आर, ये हो गया टाइप, ये दिस शुड बी द मूवमेंट, नॉट लाइक दिस, यू आर डूइंग इट लाइक दिस, तो ये नहीं करना। ठीक है, ये कर दे, ये धीरे धीरे, नो अपाइकल प्रेशर, ओनली रोटेशन का प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसा करो, तो ये एसी चला दे थोड़े, खोलो जी। लो ड्रिल लो, वो लगा दो लिनमैन ड्रिल। ये जो तीनों रूट की फ्रिकेशन है ना, उसमें लगाना है। यस यस यस, हाँ, नो नो नो, फ्रिकेशन में, हाँ, सीधा रखना है। हम्म, बस एक बार चेक कर लें। 2.27 की भी ड्रिल कर लो, फिर चेक कर लेते हैं। सर ये कंप्लीट तो नहीं हुई ना, आपने कहा था पहले चेक करें। नहीं, थोड़ी सी गई तो है, थोड़ी सी हुई। खोलो जी खोलो, ये 2.27 की ड्रिल ले लो ना, वो इसी पोजीशन में है, आप पूरा उसको बरी करो, क्योंकि वी हैव 13 है ना, तो 2.27 करके रविंद्र का हो रहा है काम, दिखा रहे हैं उसमें, उधर दिखा। हम्म? हो गया, लो अभी दिख रहा, खोलो खोलो, खोल के रखो। रिफ्लेक्टर देना है, ऊपर देखना जी। वहाँ तो 13 आ रही थी ना, थोड़ा और डिस्को जाए जरा, ये आप ये 7 की ड्रिल है ना, 2.27 की ड्रिल है ना,
8.5 की देना। हाँ यहीं पे ड्रिल करो, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन, हाँ एंगल थोड़ा सा डिस्टल रखो। रुको 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 रुको, पता क्या हो रहा है, दिस इज टचिंग दिस विथ, आपकी सारी डायरेक्शन इसी से गड़बड़ हो रही है। तो यू नीड टू बी केयरफुल। ये देखो पूरा टच कर रहा है ना उसको, जब आप यहाँ जाते हो तो ये टच हो रहा है, हाँ तो वो टच को भी ध्यान रखो। चेयर डाउन करो थोड़ी। उसी उसी होल में हो आप? हाँ जी, हैं? हाँ जी, मुझे बोल रही हूँ। हाँ तो थोड़ा सीधा कर दो ना इसको। देखो चलो ठीक है, निकालो। ये क्या था, 8.5? 8.5। अच्छा 10 लो। थर्टीन तो था ही हमारा उसमें, है ना, इसमें नहीं आ रहा।